Our next topic is academic conventions क्या होती है and writing with clarity and precision with academic conventions. So academic writing adheres to specific conventions to ensure clarity, precision and credibility. So हमारे some of the key conventions है. First is formal tone and languages. इसके अंदर आता है avoid contractions. It means use the full form of words. Like for example, cannot, can't be written as CANT. And next is avoid personal pronouns. Use the third person perspective to maintain objectivity. Third is use formal languages, avoid slangs and overly casual languages. Second point is structure and organization. जो भी हम thesis लिखते हैं या कोई भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं वो हमेशा एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए. सो उसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. Clearly state your thesis statement and outline the main points of your argument. Second is body paragraphs. Each paragraph should focus on a single main idea supported by evidence and analysis. Third is conclusion. Summarize your main points and restate your thesis in a new way. Next is logical flow. Ensure a smooth and logical progression of ideas. Next point is clear transitions. So use transition words and phrases to connect ideas between paragraphs. ये सारा हमारा structure and organization के अंदर आता है. Third point is citation and referencing. So इसके अंदर आता है first choose a citation style like APA, MLA, Chicago and use it consistently. Second point is cite sources accurately. Provide complete citations for all sources used. Third is avoid plagiarism. Always give credit to the original authors. Our fourth point is grammar and punctuation. Thesis में grammar and punctuation सही होना is very important. उसके अंदर हमारा आता है grammar ठीक होनी चाहिए, punctuation ठीक होनी चाहिए and sentence structure ठीक होना चाहिए. Fifth point is evidence and analysis. So जो भी हम thesis या कोई भी academic राइटिंग हम करते हैं उसमें हमारी एविडेंसेस एंड एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए. इसका फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट क्लेम्स विद एविडेंस. सेकंड एनालाइज एविडेंस क्रिटिकली एंड थर्ड इज ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स. उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन्स भी निकालनी होती है. एंड आवर लास्ट पॉइंट फॉर एकेडमिक कन्वेंशन इज ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी. सो हमें कभी भी बायस नहीं होना चाहिए. अवॉइड बायस. Present information objectively and fair. And second point is acknowledge alternative viewpoints. Consider opposing viewpoints and address them in your writing. So these were the basic academic conventions. And so एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास 6 points है academic conventions के. First is formal tone, जिसके अंदर आता है अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, अवॉइड पर्सनल प्रोनाउंस, यूज फॉर्मल लैंग्वेजेस. सेकंड इज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, लॉजिकल फ्लो एंड क्लियर ट्रांजिशंस. थर्ड इज साइटेशन एंड रेफरेंसिंग. इसके अंदर आता है चूज अ साइटेशन स्टाइल, साइट सोर्सेज एक्यूरेटली, अवॉइड प्लैग. फोर्थ इज ग्रामर एंड पंचुएशन. ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, पंचुएशन अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. Fifth is evidence and analysis. हमें support claims with evidences, analyze evidence critically and draw logical conclusions. And sixth is objectivity and impartiality, avoid biasness and acknowledge alternative viewpoints. So हमारे 6 points कौन कौन से हैं? Formal tone होनी चाहिए, then structure and organization, then citation and referencing, then grammar and punctuation. Fifth is evidence and analysis. And sixth is objectivity and impartiality. Our next topic is reading techniques for effective research. इसके अंदर आता है skimming, scanning, intensive reading, extensive reading and SQR3. So let us see all of them one by one. So first is skimming. Skimming refers to quickly get over an overview of text. मतलब जल्दी जल्दी रीड करने को हमने बोला है स्किमिंग, SKIMMING. ओके. नेक्स्ट इज स्कैनिंग, टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग.
When you need to find a particular fact, figure or citation, then we use scanning method. Third is intensive reading. It means to understand and analyze a text in detail. किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने को हमने इंटेंसिव रीडिंग बोला है. When you need to fully comprehend a complex text such as a research paper. कोई भी डिटेल्ड चीज़ को अगर हम बहुत अच्छे से इंटेंसली एनालाइज करें उसको इंटेंसिव रीडिंग बोला है. एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स टू रीड फॉर प्लेजर एंड जनरल नॉलेज. When you want to improve your language skills and general knowledge, that is called extensive reading. And third is SQR3 reading technique. It means survey, question, read, recite and review. Survey refers to quickly skim the text to get an overview. Second is question, formulate questions based on the headings and subheadings. Third is read, read the full text carefully, answering the questions you formulated. Fourth is recite, summarize the main points in your own words. And fifth is review, review the text and your notes to reinforce your understanding.